Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today I am in Narita, Japan, and it has been a very hectic flight. So मेरी flight कल रात को depart हुई around 11:30 and I landed here at 9:30 according to Japan time. However, India में भी बज रहे होंगे 7. I'm actually tired, not slept enough, not eaten anything enough, but still हमारी जो layover है it's so short that we are going to explore some temple here. I don't know the temple. My crew, they are actually experienced, so they know better. uh, I'm really excited. I am really fatigued right now, but ठीक है, since it's like one day layover, only 23 hour का layover है हमारा rest period. Otherwise we would have not gone anywhere, but it's really short sector and people want to explore because ये layover I don't think बहुत ज़्यादा मिलती है, because I asked one of my crew and she said the last time she came it was July 2023. So I thought let's not skip this moment. And I'm really excited. I wanted to show you all. The best part about this hotel is toilet seats are actually heated here and it's amazing. I am really loving it. Toilet seats are amazing. This is my bathroom. And yep. By the way, it's 2-degree temperature here and I forgot my coat. मतलब मैं क्या ही बताऊँ, I forgot to keep my winter coat and I have came through airport here without any thermal, without any coat. Let's not talk about it because my crew member, they have already embarrassed me enough. So it's been half an hour that we have reached our hotel and I have quickly taken shower, got freshen up, and I'm going to get ready. So see you all outside. Bye bye. So we left our hotel with this bus. This bus has routine operation from Narita airport to our hotel and our hotel to Narita mall and Narita station. Since it was raining, many of our crew dropped their plan. हम सबका plan था बाहर जाने का, and only 3 of us went outside because of tiredness and it was raining and it was very cold. You can see here I was almost slept in the bus because मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी जगने की. This is crew life, you know. You need to sacrifice something to get something. And उतरते ही हमने सबसे पहले अम्ब्रेला लिया because we were not prepared for rain. एंड अम्ब्रेला लेने के बाद हमारा ऑलमोस्ट 800 मीटर की दूरी पे हमारा किमोनो का शॉप था जहाँ से हमें अपना किमोनो रेंट करना था. नाउ दैट एक्सपीरियंस इज़ टोटली अमेजिंग क्योंकि जो लेडी थी शी वॉज सो गुड, सो जेनरस. उन्होंने हमें किमोनो सिलेक्ट करने को बताया. हमने सिलेक्ट करने के बाद शी मेड अस वेयर द किमोनो. एंड उसके बाद हमारा हेयर स्टाइल भी हुआ. हमने थोड़ा सा मेकअप भी किया टू लुक गुड क्योंकि हमारा फ़ोटोशूट था इसके बाद. एंड बाय द वे ये सारी जो प्राइस थी 3000 येन में थी, विच वॉज $20. एंड सिंस दिस शॉप वॉज लव्ड बाय मैनी क्रू, मैनी ऑफ आवर कैबिन क्रू हैज सजेस्टेड दिस शॉप. हमें क्रू को थोड़ा डिस्काउंट भी इन्होंने दिया था जो कि बहुत अच्छी बात थी. So this was my final look and it was so beautiful. I could not believe that I'm wearing it क्योंकि मैंने हमेशा से सोशल मीडिया पे, टीवी पे देखा था लोगों को पहनते हुए. So दूसरे ही रूम में हमारा फ़ोटोशूट हो रहा था. By the way, that lady and her husband run this business solely. So she made us wear kimono and उनके हस्बैंड ने हमारी फ़ोटोशूट करी. हम तीनों की एक एक बार करके फ़ोटोशूट हुई and that was also a different experience. That umbrella was pretty cute. I wanted to keep it with me but it was just a prop for photoshoot.
फ़ोटोशूट के बाद हम सब निकल पड़े नरिता सेन टेम्पल के लिए। हमने अपने सामान उनके शॉप पे छोड़ दिए एंड वी लेफ्ट फॉर आवर टेम्पल विजिट। बाय द वे दैट किमोनो एंड द लेयरिंग हेल्प्ड अस फ्रॉम द कोल्ड, क्योंकि हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी उसके बाद। एंड जो नरिता सेन टेम्पल था उस शॉप से कुछ ही दूरी पे था, जो कि अच्छी बात थी क्योंकि वी गॉट टू सी स्ट्रीट एंड वी गॉट टू सी पीपल. This child was so pretty and finally we reached to Narita Sen temple and the temple was extremely beautiful, क्योंकि इसके जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन थे, इसकी बारीकी जो थी, स्पेशली द लेक वॉज सो प्रिटी. टेम्पल में एंटर करने से पहले हमें अपने हैंड वॉश करने थे एंड हैंड वॉश करने के बाद वी क्लाइंब अप टू द टेम्पल. यहाँ पे हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करा क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. अच्छी बात ये थी कि बारिश की वजह से काफ़ी भीड़ नहीं थी वहाँ पे एंड इट वाज सो पीसफुल. So this was the view before climbing up to the main entrance. By the way, let me know in the comment section if I am the only one who thinks this entire view is giving Temple Run vibe, because honestly the tree, the branches, the green color and everything is giving me Temple Run vibe and it's so pretty. It's reminding me of Temple Run game. So this was the main entrance and it was peaceful. There were less people. इसके बगल में अच्छी सी आर्किटेक्चर है एंड बहुत प्यारा सा लेक भी है which we visited. I did not record it but it was so pretty. Luckily we met few locals and they clicked our picture there and we also talked with them. In Japanese? Yes. No, like just make us understand in English only. I want to know what is this temple all about. 英語でさ、この寺を紹介してほしい。わからない。英語で。わからない。Maybe this temple is biggest in cheaper prefecture. Okay. But we just know the information. Actually, we are the first time to come to here. Oh, okay. Yeah. No worry. So Since it was their first time also, I don't wanted to disturb them. I thought I should go by myself and search about the temple. After this temple visit, we went back to shop and returned our clothes. Our heart was filled with joy, with a beautiful experience. I promise that we will come again if we ever visit Japan. And after this, we went for to eat something. We wanted to eat ramen. Accidentally I delete the video and photo from my phone and I'm regretting it because it was so cool. We cooked it on our table and I deleted it. So done for the day. It was an amazing day though. बहुत थकान हो चुकी है मुझे याद नहीं, मैं कल 1 बजे दोपहर का सो के उठी हूँ. उसके बाद से मैंने अभी तक नहीं सोया एंड आई हैव टू टेक स्लीप बिकॉज कल जो मेरी फ़्लाइट है वो पूरे 9 घंटे की है आई गेस. सो गना बी रियली हैक्टिक एंड 10 बजे की रिपोर्टिंग है एयरपोर्ट पे. सुबह जल्दी उठना भी है. दो आई एम रियली हंग्री सो आई ऑर्डर फूड रूम में ही बिकॉज मेरी हिम्मत है नहीं नीचे जाके खाने की. सो बाय. So my dinner has arrived. I ordered pan-fried Japanese brand Kinso chicken with ice cream. I don't know why they have sent me this ice water. I don't need it. It's -2 degree temperature right now. So रात 9 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक पूरे 11 घंटे सोने के बाद मैं फाइनली आई एम फीलिंग लिटिल बेटर एंड फ्रेश टू ऑपरेट अनदर फ्लाइट. हमारी चेकआउट टाइम 9:30 की थी एंड आवर सीनियर टोल्ड अस टू रिपोर्ट एट होटल लॉबी exactly at 9:30. It's always a good practice to go 15 minutes prior than going on time because it's considered late in Japan if you are going exactly on time, क्योंकि हमारी जो कैब होती है वो भी exactly time पे available हो जाती है. 9:30 चेकआउट करने के बाद I had some 1200 yen left in my coupon, so I thought I should buy something. I didn't do any breakfast क्योंकि I'm not a breakfast person at all. सुबह में मुझसे ज़्यादा खाया जाता नहीं है, तो मैंने उन 1200 येन का आई बॉट चॉकलेट एंड कप केक
और वो ख़रीदा मैंने अपनी बहन के लिए बिकॉज शी लव्स चॉकलेट एंड शी वांटेड मी टू बाय समथिंग फ्रॉम देयर. सिंस इट्स रियली शॉर्ट आई कुडंट बाय एनीथिंग, सो आई थॉट लेट्स मी बाय चॉकलेट विल बी बेटर. और फिर हम निकल पड़े वहाँ से अपने एयरपोर्ट के लिए. फ़्लाइट टाइम पे थी, हम टाइम पे पहुँच गए और फिर वहाँ पे हम अपने एयरक्राफ्ट पे बोर्ड करा. उसके बाद एवरीथिंग वेंट स्मूथली. आई रीच्ड दिल्ली अराउंड इन द नाइट 7:30 आई रीच्ड हियर एंड फ़्लाइट वॉज अमेजिंग. हमें काफ़ी अच्छी फ़्लाइट थी, मेरी फर्स्ट फ़्लाइट थी, फर्स्ट लेओवर था. एवरीथिंग वेंट सो स्मूथ. I loved it and it was an amazing experience. So thank you so much guys if you watched till here. I hope you liked this video. Do subscribe my channel if you liked it and follow me for such content. Till then, bye bye. Take care.